Hello, good morning students. Today I am going to discuss the question number 3 of exercise 1.1 NCERT. Write the following sets in roster form. Question number 3. The first question is x is to x is an integer where x is greater than 7 and where x is greater than minus 3 and less than 7. X is to x is an integer. X is to x is an integer and the x is greater than or equal to minus 3 and less than 7. So its answer roster form will be x value is greater than or equal to minus 3 but less than 7. The elements will be minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Second one, B. X is to x is a natural number less than 6. So natural numbers less than 6. 1, 2, 3, 4, 5. Next, third one. X is to x is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8. So 2-digit natural number जिसके यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस का ऐड करने से हमको 8 मिलना चाहिए. That is 17, 26, 1 plus 7, 8, 2 plus 6, 8. 3, 5, 35, 44, 53, 62, 71. So सभी के यूनिट और टेंस प्लेस को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 8. नेक्स्ट कम्स फोर्थ. B equals to x is to x is a prime number which is a divisor of 60. So the numbers which are divides the 60 and they should be prime number. They are 2, 3 and 5. Fifth, E. The set of all letters in the word trigonometry. Trigonometry में हमारा जो वर्ड दिया है TRIGO ट्रिगोनोमेट्री. जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में कहा था कि अगर क्वेश्चन हमारा कैपिटल लेटर में कोई वर्ड दिया है तो उसके एलिमेंट्स को यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखा जा सकता है. सो TRIGO. अब O ऑलरेडी आ चुका है एक बार इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे. P भी आ चुका है, R भी आ चुका है, Y. तो ये होगा TRIGONEY. M हमारा नहीं लिखा गया है, M हम यहाँ लिख सकते हैं अलग से. अब नेक्स्ट सिक्स्थ. The set of all the letters in the word better. Better में E 2 बार आ रहा है, T 2 बार आ रहा है, उसे एक ही बार लिखेंगे. B E T R. So these are the roster form representations of question number 3. Now question number 4. Question number 4. First set A 3, 6, 9, 12. अब इसके पीछे की जो प्रॉपर्टी है सेट बिल्डर फॉर्म में से चेंज करना है. तो 3 into 1 3, 3 into 2 6, 3 into 3 9, 3
into 4 12। तो यहाँ पे कोफिशिएंट जो 3 3 3 है वो कांस्टेंट है और जो वेरिएबल पार्ट है 1 2 3 4 कंटिन्यूटी में चेंज हो रहा है। सो सेट बिल्डर फॉर्म x is to x is equals to 3n where n belongs to natural number and the value of n is less than or equals to 4. That is the set builder form representation of the set 1. Second one, it is given 2 4 8 16 2 4 8 16 32। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉपर्टी 2 का पावर 1 2 का पावर 2 2 का पावर 3 2 का पावर 4 2 का पावर 5। सो 2 का पावर 1 2 का पावर 2 2 का पावर 3 2 का पावर 4 and 2 to the power 5। So base is constant and variable is going on changing in continuity। So b is equals to x is to x is equals to 2 to the power n where n belongs to natural number and the value of this n is less than or equals to 5। Now the third one c, which is given 5 25 125 625 5 25 125 625। It can also be taken as 5 to the power 1, 5 to the power 2, 5 to the power 3, 5 to the power 4। So 5 to the power 1, 5 to the power 2, 5 to the power 3, 5 to the power 4। So this can be set builder form x is to x equals to 5 to the power n where n belongs to natural number and n is less than or equals to 4। Next, the fourth one d, which is given 2 4 6 और लास्ट एलिमेंट इसका नहीं दिया हुआ है। we can't count how many number of elements are there। so there are infinite number of elements, even natural numbers, so it can be taken as an infinite set। so d is equals to x is to x is an infinite set of even natural numbers that is our fourth one। now let's move to the fifth question of it। Fifth question is given 1 4 9 100। So the last element of this set is given, so it is a finite set। so 1 square 2 square 3 square और इसके बाद कंटिन्यूटी में 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और लास्ट में फिर 9 का स्क्वायर और लास्ट में 10 का स्क्वायर। तो इसको लिखा जा सकता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेस कंटिन्यूटी में चेंज हो रहा है 1 से लेकर 10 तक, लेकिन पावर कांस्टेंट है 2। So it can be written as E is equals to x is equals to n square where n belongs to natural number and value of n is less than or equals to 10। Now let's move to the next question। So question number 3 and 4 I have solved it for the roster form and the set builder form। Question number 5, you have to list out all the elements in the roster form। Question number 6, left side and the right side roster form and set builder forms are given respectively। You have to just match the following of it, the correct answer, that you have to do it। Now we comes to the types of sets, the next topic। The first one
empty और null और void set, तीन नाम है। इसे अपन कर्ली ब्रैकेट से लिखते हैं या फाइल, नाउंसिएशन फाइल। A set which does not have any element, कोई भी एलिमेंट ना हो जिस सेट में, उसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट। A set which have no any element is called empty or null or void set. It is denoted by simply by the curly bracket, जीरो तक भी नहीं लिखना है इसके अंदर, और by simply putting this sign which is known as file. इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं। The solution of an equation x square plus 9 equal to 0। अगर हम देखें x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो x स्क्वायर इक्वल टू -9 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी इज नेवर पॉसिबल, देयरफॉर नो एनी सॉल्यूशन ऑफ इट। नो एनी सॉल्यूशन मींस it will be a just empty set. Second, finite set. Finite set. A set which consists of finite number of elements. Finite number of elements is known as finite set. Example 1 3 6 4। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4। मतलब जिस सेट में अपन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करके बता सकते हैं वो हमारा फाइनाइट सेट होगा। Another example, B is equals to set of all natural numbers less than 10। तो set of all natural numbers less than 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस सेट में हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारा हो गया फाइनाइट सेट। नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं। These all notes you have to write down in your fair copy with the examples. Third, infinite set. A set which consists of an infinite number of elements. An infinite number of elements is called infinite set. Example, A equals to 1 3 5 dash dash dash. The last element is not given here, so here the number of elements are uncountable. So it is an infinite set. Second set, if we can take set of all even natural numbers. Set of all even natural numbers, there are infinite even natural numbers, so it is also taken as an infinite set. Now next we comes to the
equal sets. Fourth, equal sets. Two sets A and B are said to be equal sets if they have same elements and same number of elements irrespective of their positions in braces. So अगर मैं एक सेट लेता हूँ A इक्वल्स टू 1, 9, 4, 16 और दूसरा सेट में लेता हूँ 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो यहाँ दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4 एलिमेंट्स, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द सेट्स A and B, and they are having also the same elements. 1 का स्क्वायर यहाँ है, 9 3 का स्क्वायर 9 यहाँ है, 4 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 ये यहाँ है, ये फर्स्ट पोजीशन पे लास्ट पे है, ये सेकंड पोजीशन पे फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे थर्ड पोजीशन पे है, ये थर्ड पोजीशन पे फोर्थ पोजीशन पे है. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशंस इन प्लेसेस. पोजीशंस कहीं भी हो लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द सेट्स और सेम एलिमेंट्स होने चाहिए. सो हियर वी कैन नाउ से दैट both the sets A is equals to B. Now let's move to the exercise 1.2. In exercise 1.2, which of the following are the examples of the null set? कौन सा एग्जाम्पल है नल सेट का और कौन सा नहीं है, बस वही आपको आइडेंटिफाई करना है पहले क्वेश्चन में. Which of the following sets are finite or infinite? ये भी आपको सेकंड क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है, थर्ड क्वेश्चन में भी वही आपको आइडेंटिफाई करना है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये पता करना है कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर A इज इक्वल टू B. तो अभी जैसे मैंने बताया नल सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इक्वल सेट्स का डेफिनेशन क्या है. फोर्थ क्वेश्चन वही है. आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, दैट आल्सो यू कैन डू इट. एंड फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट द इक्वल सेट्स. तो हमारे पास A B C D E F G H, कहने का मतलब हमारे पास 8 सेट्स दिए हुए हैं. उन 8 सेट्स में हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेट एक दूसरे से इक्वल है, whether A is equal to B or G is equals to C or D is equals to B, that you have to identify. So 1.2 exercise is a just objective type questions. If there are oral questions, you have to solve in your fair notebook copy. Now next comes to the topic subsets. Subsets. अब सबसेट्स पहले आप समझ लीजिए सबसेट्स क्या है. अगर हमारे पास एक कोई सेट दिया हुआ है A जिसमें 1 2 3 4 ये आपको सेट्स दिए हैं, एलिमेंट्स दिया है 4 एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज 4. तो इन एलिमेंट्स को लेकर मैं कोई नया सेट बनाता हूं. अगर मैं कोई भी एलिमेंट ना लूं मतलब एम्प्टी सेट, या मैं एक एलिमेंट एट ए टाइम लूं या 2 एलिमेंट्स एट ए टाइम लूं,
या 3 एलिमेंट्स या सभी एलिमेंट्स एट ए टाइम। लेट अस सी। सेट बी मैंने बनाया जिसमें मैंने एक भी एलिमेंट नहीं लिया। सेट सी मैंने बनाया जिसमें मैंने एक एलिमेंट लिया, कोई भी एक एलिमेंट। सेट डी मैंने बनाया जिसमें मैं कोई भी 2 एलिमेंट ले रहा हूँ। सेट ई मैंने बनाया जिसमें मैं कोई भी 3 एलिमेंट ले रहा हूँ। और सेट एफ मैंने बनाया जिसमें मैं सभी एलिमेंट्स ले रहा हूँ। और एक सेट मैं ऐसा बना रहा हूँ जिसमें मैं कुछ एलिमेंट्स तो ले रहा हूँ, लेकिन कुछ एलिमेंट्स मैं उस सेट में जो नहीं है वो लिख रहा हूँ। तो चाहे मैं एक एलिमेंट लेके सेट, एक भी एलिमेंट सेट लेके ना बनाऊं, चाहे 1, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4। कहने का मतलब ये है कि अगर ये एलिमेंट्स इसमें बिलोंग कर रहे हैं तो ये सबसेट होगा ए का। 1 और 4 बिलोंग्स टू ए, तो ये सबसेट है ए का। 3, 1, 4 भी बिलोंग कर रहा है सेट ए में, तो ये सबसेट होगा। 4, 1, 3, 2 ए भी सबसेट होगा। 1, 2 बिलोंग कर रहा है लेकिन 7 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो ये सबसेट का साइन है। अब B is also a subset of A. Empty set is also a subset of A. So we are coming to the 3 points in conclusion. हमारे पास 3 conclusions आते हैं इस बेसिस पे सबसेट्स के लिए कि every set has null set as its first subset। हर सेट का पहला सबसेट नल सेट होता है। एवरी सेट हैज ए नल सेट। एवरी सेट हैज ए नल सेट एज इट्स फर्स्ट सबसेट। सेकंड, एवरी सेट, सॉरी एफ में देखिए, एवरी सेट इज ए सबसेट बाय इटसेल्फ। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है, मतलब दे आर इक्वल सेट्स। ए एंड एफ आर इक्वल, सो एवरी सेट इज ए सबसेट बाय इटसेल्फ। एवरी सेट इज ए सबसेट बाय इटसेल्फ। एंड थर्ड, the number of subsets formed by any set is given by 2 to the power n formula, where n is equals to number of elements in a given set। तो यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे? 4। सो नंबर ऑफ सबसेट्स फॉर्म फॉर द गिवन अबव सेट विल बी 2 to the power n, 2 to the power 4 हो जाएगा। दैट विल बी 16 सबसेट्स बनेंगे इस सेट के। यदि हमारे पास कोई ऐसा सेट है Z इक्वल टू एक नल सेट है। नल सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज 0, नो एनी एलिमेंट। सो टोटल सबसेट्स फॉर्म्ड बाय द अबव सेट्स, टोटल सबसेट्स विल बी गिवन बाय फॉर्मूला 2 to the power n, 2 to the power 0, और किसी का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1। देयरफॉर सबसेट जो बनेगा एक नल सेट का, वो नल सेट ही होगा। ठीक है। सो हमारा क्या निकलता है कंक्लूजन सबसेट से कि एवरी सेट हैज ए नल सेट एज इट्स फर्स्ट सबसेट। सेकंड, एवरी सेट इज ए सबसेट बाय इटसेल्फ एंड द नंबर ऑफ सबसेट्स फॉर्म्ड बाय एनी सेट is given by the formula 2 to the power n,
where n is equals to number of elements in a given set. As an example, here number of elements is 4. 2 to the power 4, 16 subsets will be formed of the set. And if a set consists of no any element, empty set, 5. So number of elements will be 0. So 2 to the power n, 2 to the power 0 equals to 1. Only one subset will be there of a null set, that is null set of 5 itself. Let's move to the next topic. Intervals as subsets of R. Intervals as subsets of R. Intervals as subsets of R means real numbers. Real numbers. So इंटरवल्स में हमारे पास 4 इंटरवल्स हैं. एक हमारे पास है ओपन इंटरवल, सेकंड हमारे पास है क्लोज्ड इंटरवल, उसके बाद है ओपन क्लोज्ड इंटरवल, उसके बाद हमारे पास है क्लोज्ड ओपन इंटरवल. अब ओपन इंटरवल का रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन देखिएगा. सो ओपन इंटरवल में a, b दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट्स रहेगा. इसका मतलब ये है कि a और b एक्सक्लूडेड है, लेकिन a और b के रेंज में जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो इंक्लूड किए हुए. एग्जाम्पल जैसे मैं दे रहा हूँ 2, 7. तो एक नंबर लाइन पे 2 के बाद जितने नंबर्स हैं और 7 के पहले जितने नंबर्स हैं वो सभी इंक्लूड होंगे एक्सेप्ट 2 and 7. And in set builder form it is written as x greater than a less than b. Closed interval में दोनों तरफ बिग ब्रैकेट आएगा और इसका मतलब ये है कि इसके रेंज में आने वाले सभी एलिमेंट्स तो इंक्लूड होंगे, साथ ही साथ a और b भी इंक्लूड होगा. एग्जाम्पल 2 or 7 on a number line including 2 and 7, all the numbers will be included. So this can be written set builder form x greater than or equal to a, less than or equal to b. ओपन क्लोज इंटरवल, पहले ओपन है स्मॉल ब्रैकेट, फिर क्लोज है तो बिग ब्रैकेट. इसका मतलब ये है कि a इंक्लूड नहीं है लेकिन b इंक्लूडेड है. और इसका सेट बिल्डर फॉर्म x ग्रेटर देन a लेस देन और इक्वल टू b. एग्जाम्पल 2, 7. 2 इंक्लूडेड नहीं है, 7 इंक्लूडेड है और इसके बीच के जितने नंबर हैं वो इंक्लूडेड है. और इसको लिखा जाएगा x ग्रेटर देन a लेस देन और इक्वल टू a हो चुका है, सॉरी. क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड पहले है बिग ब्रैकेट, a ओपन बाद में है स्मॉल ब्रैकेट, ये इंक्लूडेड है, b इंक्लूडेड नहीं है. एग्जाम्पल 2, 7. सो यहाँ 2 इंक्लूडेड है, 7 इज एक्सक्लूडेड. सो इन सेट बिल्डर फॉर्म x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a बट लेस देन b. तो ये ध्यान रखेंगे. अब इसका अगर मेरे को डायग्राम बनाना है, ग्राफ डायग्राम, सिंपल डायग्राम, मैंने एक नंबर लाइन बनाई,
और यहाँ मैंने ले लिया सपोज ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7। सेकंड वाले के लिए भी मैंने एक नंबर लाइन ले ली, थर्ड के लिए भी नंबर लाइन ले ली, फोर्थ के लिए भी एलिमेंट्स वही ले रहा हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर ए और बी 2 और 7 दोनों को एक्सक्लूड करना है। तो एक नंबर लाइन में यहाँ होता है माइनस इन्फिनिटी, इधर हो जाता है प्लस इन्फिनिटी, माइनस लेफ्ट साइड प्लस माइनस प्लस। नाउ व्हेन आई ड्रॉ ए सिंपल ग्राफ 2 से मैं लूँगा यहाँ से और इसको हल्का सा डार्क कर दूँगा 7 पर, और यहाँ के इसके ऊपर और इसके ऊपर यहाँ से 2 के ऊपर एक सर्कल बना दूँगा। इसका मतलब ये है कि 2 और 7 इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे 2 और 7 दोनों इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे मैं इस सर्कल को डार्क कर दूँगा, बोल्ड कर दूँगा और इसको थोड़ा सा डार्क कर दूँगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 और 7 इंक्लूडेड है, इस रेंज के बीच के नंबर्स भी इंक्लूडेड है। इधर ओपन इंटरवल 2 एक्सक्लूडेड है, तो मैंने सर्कल बनाया 2 पे, और 7 इंक्लूडेड है इसलिए मैंने इसको डार्क किया और ये मैंने डार्क कर दिया। इसके बाद ए मतलब पहला नंबर 2 इंक्लूडेड है, तो मैंने एक डार्क सर्कल बनाया, और 7 आपका एक्सक्लूडेड है इसलिए मैंने एक सर्कल बना दिया। तो ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल एंड क्लोज्ड ओपन इंटरवल। नेक्स्ट एक्सरसाइज जब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे उसमें आप ध्यान रखिएगा कि आपको पहले स्टडी कर लेना है। उसमें 2 क्वेश्चंस हमारे पास एक्सरसाइज में ऐसे आएंगे जिसमें हमको इस फॉर्मेट में लिखना है। अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया है तो इस फॉर्मेट में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, और अगर सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसे हम इसे रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखना है। सो बी केयरफुल, स्टडी एंड राइट ऑल द नोट्स एंड study all the definitions, by heart all the definitions as well as the formulas. Thank you.